to you, sir. Assalamu alaikum ji. I hope you guys can hear me now. Hamad, can please confirm if you can hear me, if everybody else can hear me? Yes, sir, we can hear you. Perfect. Excellent. Thank you, Hamad, for inviting me. I'm actually honored and I was very excited when I received this invitation to speak to our upcoming generation, the young ones. And welcome everybody. And Hamad has already introduced uh, me to all of you. And I have been practicing for almost 13 years now and have applied for my Supreme Court license, inshallah. If not this year, next year I'll get that. And during my 13 years, I have worked with a lot of lawyers in terms of seniors as well as opponents and colleagues at the chambers that where I worked, as well as the firm that I'm managing right now. And why I was excited and looking forward to speaking to you guys today was that over the past 3, 4 years, we've been holding internship programs at the firm. And this year, we were fortunate enough to um, host a number of interns. And this year, I noticed a remarkable improvement in the students who are completing their LLB degrees or have completed their LLB degrees and are now looking forward to joining the profession. And over the past few years, a lot of concerns have arisen, a lot of concerns need to be addressed. And there were a lot of questions posed, and there are a lot of recurring issues and queries, which I believe this platform would allow me to address. And I am not that old. I am very young, Alhamdulillah, and I can relate to a lot of young uh, graduate students who are looking forward and planning to join this profession. I've been fortunate enough to practice in Pakistan and particularly Islamabad and Rawalpindi. And I hope and I believe a lot of you may not be from Islamabad or Rawalpindi, but I understand the difference in culture because I have argued before courts in Karachi, Lahore, Peshawar, Ahmedabad, Jhelum, so forth. And I've always tried to remain accessible to all junior lawyers. And I always tell them, give this is my phone number, this is my email address, this is my address, this is my office address where I sit. You guys can always come over, have a cup of tea, and discuss your career and legal propositions with me. The topic that I've been invited to speak on today is entering, navigating, surviving, and excelling in this profession. Um, I believe most of you, whoever is attending this speaking, this seminar today, are planning to join or are relatively fresh in this profession. And you must have a lot of questions in your mind how to go about it. A few days ago, we routinely engage counsels for cases in remote areas. And very recently, a counsel that we had engaged, he's operating from Haripur. And he had posted something, he maintains and calls those his black diaries or diaries from a black coat or something. And he was sharing his experiences, and I responded and replied to his posts over LinkedIn. And I felt this was high time I was going to publish something. And God, coincidentally, God willing, Hamad approached me with this topic.
and this was just the perfect opportunity. Ladies and gentlemen, this profession, the profession of law, there are very few professions in this world which are called a practice. Medicine is a practice, just like medicine. Law is a practice. You cannot expect to be good at something unless you practice it and keep on practicing it. Do not expect right off the bat. I will be very blunt here, and I apologize if there are any senior lawyers here or any junior lawyers. I would try to be very serious here. I would try to be very blunt here, and I apologize if I offend anybody here. I'm going to say a few things which may require some clarification or clarity or pose further questions. I'm happy to answer those in due course. This do not, do not right off the bat. Once you've gotten your LLB degree and you have obtained your license to plead before the lower courts, just the first thing you guys need to do is tell yourself you're not a lawyer yet. You have just qualified. You have just obtained a license to appear. To be a lawyer is much, much more than holding academic qualifications or holding a license or the ability to or the permission to wear the uniform. Being a lawyer means you having a grasp over law, how the law is interpreted, how it is applied, how strategies are devised, how remedies are elected. So it's a very, very thorough job. And it's called legal practice because over a period of years, perhaps even a decade, you need to consistently, constantly, rigorously practice and practice. Now, I would try to have a structured conversation here and focus on entering the profession. Every now and then, I come across a junior or a fresh grad who complains, "Ki bhai, this profession is not for somebody who does not have connections. This profession is not for somebody who hasn't done a bar. This profession is not for somebody who's not good at English. This profession is not for somebody who cannot afford himself coming to court, so forth. And this profession is for somebody who is fortunate, who has the resources." And let me tell you, all of those are fallacies. Many, many successful lawyers in Pakistan, I wouldn't name anybody, but if you do your own research, many, many renowned successful lawyers in Pakistan have hailed from very remote areas and hailed from not so fortunate families and have had very basic education, their primary education, their secondary education. And what they have excelled at is when they had entered the profession and they worked with sincerity and they did not have any head starts. That is how, and a lot of people, we'll get a lot of examples, they have actually excelled. So there is an opportunity here in the profession. There are chances, there are ways, there are routes for you to excel. The first thing you need to do is, as I was advised by my senior, whenever you find work, be it at chambers, be it at a firm, be it at any organization, you need to keep your head down for a few years. I always give an example to my associates. Place a piece of tissue paper in front of you, right next to it, place a piece of a cardboard next to it. Next to it, place a piece of paper. Next to it, place a piece of plastic. And so you've got 4 different materials in front of you. You take out and just put a drop of water over each of these materials.
which material would absorb the water first or the quickest? That, of course, would be a piece of tissue. Why? Because by nature, it is porous and it has that ability, inherent ability to absorb. Similarly, all of you need to be porous enough, to be flexible enough, to be humble enough, to be able to absorb all kinds of information that you're coming across, your connections, legal skills, judgments that you're trying to read. So you need to be open and you need to absorb things. And for the first 3 or 4 or 5 years in this profession, you just need to keep your head down and keep on absorbing and absorbing and absorbing and absorbing. Do not try to get ahead of yourselves. There's another example that I give to my associates is you need to understand the difference between a conqueror and an explorer. For the first few years in this profession, you need to be an explorer. Do not get out there and try to conquer anything. There are a lot of other conquerors out there who've already conquered a lot of ground in this profession. You will, of course, you can defeat them at times given the right opportunities and environment, but that is not what you're here for. You're here to learn and grow. So the first thing you need to do is, as I did, and as I was advised by my professors, people who were sincere to me, was you need to find yourself a senior, जिनको उर्दू के अंदर यहाँ पे और हमारे कल्चर के अंदर उस्ताद कहते हैं. There are a lot of courts. The best courts are civil courts, trial courts, and high courts. So if you've completed your LLB and you haven't yet found work, or you're trying कि भाई कोई बंदा मुझे किसी के पास रेफर कर दे, the best thing you can do, the best favor you can do to yourself is just go and sit in the high court. There are hundreds and thousands of cases being pleaded over there. Do not waste your time in kachehari. Do not waste your time dropping off CVs. Do not waste your time looking at job advertisements. Just go and sit there in the high court. There you will, one, learn from the cases that are being argued over there. The most important thing is you will see the lawyers who are arguing those cases. And if you might be interested in corporate law, you might be interested in civil law, you might be interested in criminal law, you might be interested in family law, so forth, constitutional law. You need to find the person who is arguing the case to the best of his abilities. Success ultimately in the profession, we have this faith in Allah. It is in the hands of Allah. Izzat be, Daulat be, Shuhrat be. But you need to find somebody who is sincere with his work. And when you hear him and when you see him arguing the case, you would know. Give yourself a few weeks, give yourself a few months, just go sit in the high courts, explore the courts. एक दिन एक की अदालत में बैठ जाएं, दूसरे दिन किसी की अदालत में बैठ जाएं, कभी किसी अदालत में. Just go, get out there and find yourself an ustad. This is something a lot of young lawyers do not understand. They're always seeking कि कोई हमें किसी के पास रेफर कर देगा, कोई सिफारिश कर देगा, कोई हमें किसी के पास लगवा देगा. And trust me, I've been all around the world, alhamdulillah, and I've spoken and dealt with a lot of lawyers. Or it's not just even lawyers, from every profession. Somebody who has the knowledge and somebody who is sincere to his profession, who's not there out to just make money, but literally just a law hai to law ke andar you're looking for a jurist. So somebody who is good, somebody who's good with law, he would be more than happy to entertain you. I'll come to the other side, the financial side as well in a bit, but first thing you have to secure for yourself is a sincere mentor, a sincere teacher, a sincere senior. And just trust me, a lot of lawyers
they're very expressive people. We are very sociable, and we are more than happy to entertain you even for like over a cup of tea, samosa, जिस तरह के हमारे कल्चर के शहरियों के अंदर बार रूम्स के अंदर चलता है. If it's a good lawyer, he will entertain you. You just speak to him. You just speak to him, say, tell him, I've graduated, I'm looking for a mentor, I'm looking for a start, I've seen you argue, impressed by the way you have argued this case. Thoda sa, you need to probably rub his ego as well. But this is how you look for an ustad. And this is the best favor you can do to yourself in your earliest years. Find yourself a good ustad. And you have to find it him or her yourself. Don't leave it to anybody else. Uske baad, there is an English saying or a quote from a movie I do not recall, but I recall the words exactly. And I'll translate this into Urdu for anybody else who could not make sense of what I've said. How you expect to run with the wolves come night when you spend all day sporting with the pups? आप इस ट्रांसलेशन उर्दू में ये है कि आप रात की तारीकी में भेड़ियों के साथ शिकार करना कैसे सीखेंगे अगर सारा के सारा दिन आप पपीज, उसके मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगा, उनके साथ गुजारते हैं. तो सो यू नीड टू स्टार्ट एसोसिएटिंग योरसेल्फ with big names in this profession, and you need to recognize their abilities. You need to learn from their cases. हाई कोर्ट्स नीचे सुप्रीम कोर्ट्स में उनकी फाइल्स मिल जाती हैं, उनकी प्लीडिंग्स आप सर्टिफाइड कॉपीज, कच्ची कॉपीज निकलवा के just get the copies. नहीं है तो walk up to the counsel, walk up to his clerk, ask them कि जी this is the case you've pleaded, this is the case you were arguing, can I get a copy of this? I want to read how you've pleaded, I want to look at how you've put together the file, so forth, and learn from the best. This is what this quote or this dialogue or whatever you want to call it means. How you expect to run with the wolves come night when you spend all day sporting with the pups. You need to learn from the best. Do not associate yourself with lawyers who are just out there to do run-of-the-mill cases. If you want to excel, ultimately, you need to lay down solid foundations. And उसके बाद फिर सवाल काफी सारे ये उठता है कि जी okay, right after my graduation, or I've done 1 year or 2 years into the profession, I've not now got my high court license, what to do next? मेरी अपने उन associates को या juniors को advice ये होती है कि do your masters as soon as possible. ये प्रोफेशन टाइम के साथ साथ बहुत ज्यादा competitive होता जा रहा है, और इस चीज का इनकार जो लोग करते हैं वो करते हैं, मैं इस चीज का इनकार नहीं करता. In next 10 to 15 or 20 years, you will see a drastic change in the profession, the entire field. And जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होगी, जिस तरीके से कॉन्सेप्ट्स एडवांस होने जा रहे हैं, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, जिस तरीके से अब ग्लोबलाइजेशन आप देखते हैं. I've come across a lot of lawyers who are now based in UAE और सिंगापुर, एंड वो भी पाकिस्तान में आके प्रैक्टिस करते हैं. तो every now and then, and in the future at least regularly, now you will come across lawyers who are qualified from different jurisdictions, and they are much better equipped academically to argue cases in much more depth. So okay, आप LLB के बाद साल 2 साल आप करें इसको, आप अपनी प्रैक्टिस करें, मगर उसके बाद as soon as possible you need to get a specialization, and that is where you would develop a niche. What is a niche? A niche is कि आप किस फील्ड के अंदर, किस सब्जेक्ट के अंदर एक्सेल करते हैं और आप अपना नाम किस में बनाना चाहते हैं. I see a few names here, and I consider they've got some niches as well. Property law के अंदर, family law के अंदर, constitutional law के अंदर, या corporate transaction side के ऊपर आप कोई काम करना चाहते हैं. So you need to, and जो मैंने पहले बात की, give yourself a few years, 3 years,
5 years, at least 3 years, to develop yourself a niche, to develop a niche for yourself. And that is when you decide whether or not you want to do a master's and which master's you would like to do. जो वोकेशनल कोर्सेज हैं बार या जो SQE जिसको कहते हैं, those are vocational courses. They help to a large extent, but somebody who's done bar and practice in Pakistan, or somebody who has not done bar and then practice in Pakistan, तो 10 साल के बाद उन दोनों के अंदर कोई खास फर्क नहीं रहता except for this title. A bar would probably give you हेड स्टार्ट इन टर्म्स की, जी ठीक है आपने बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से कुछ चीजें पढ़ ली हैं, कुछ चीजें सीख ली हैं. बिकॉज अंडरस्टैंड बार का जो कॉन्सेप्ट है बाहर के ममालिक के अंदर, बी इट द US और द UK, वहां पे LLB करने के बाद लाइसेंस नहीं मिलता कि आप अदालत के अंदर पेश हो और कोई केस आर्ग्यू करें. वहां के बाय लॉ रेगुलेशंस ये है एक, यू हैव टू डू अ वोकेशनल कोर्स. वहां पे 4 एंड्स हैं, ये न्यूयॉर्क बार हो गया, बॉस्टन बार हो गया. यू हैव टू सिट दोज एग्जाम्स, यू पास दोज एग्जाम्स, you then get your license, and you then are able to appear and plead before the courts. पाकिस्तान के अंदर ये रूट नहीं है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है. सो ऑफ कोर्स इट्स सिंपल. सोचिए कि कोई आप एक ऐसा अपने लिए सीनियर ढूंढ लेते हैं जो कि हफ्ते के अंदर 5 दिन आपको डेली कुछ सिखाता है और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके के अंदर सिखाता है. वो पहले 3 महीने आपकी प्लीडिंग्स के ऊपर फोकस करता है, फिर 3 महीने के अंदर आपकी रिसर्च के ऊपर फोकस करता है, फिर 3 महीने आपकी ड्राफ्टिंग पे और आपके आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर फोकस करता है, और बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको ये चीजें सिखाते हैं. और साल के बाद फिर आपको सर्टिफाई करते हैं कि इस बच्चे को, इस साहब को, इन साहिबा को मैंने कुछ सिखा दिया, पढ़ा दिया. अब एक टेस्ट केस इनको दे देते हैं. वो टेस्ट केस अगर ये पास कर जाते हैं, उसके ऊपर उनकी एक किसी किस्म की रिजल्ट निकल आएगा. तो बाहर के ममालिक के अंदर बार बड़ा महंगा कोर्स भी होता है. पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है. इस वजह से यहाँ पे क्योंकि स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन नहीं होती, सो फोर्थ. सो जो भी बाहर से बाहर करके आते हैं उसको कोई ज्यादा एज नहीं होता, एक्सेप्ट कि उन्होंने एक बड़ा क्विक रूट, बड़े एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से चंद चीजें सीख ली होती हैं, चंद कॉन्सेप्ट सीख लिए होते हैं, कुछ चीजों को वो समझने लग जाते हैं, आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि बाहर का कोई प्रॉपर कोर्स नहीं है, तो उस वजह से वो बाय द टाइम दी लॉयर्स मेक सेंस ऑफ इट, उनको 4-5 साल गुजर जाते हैं. सो बार इतनी कोई खास चीज नहीं है. हाँ एक चीज है, इट्स अ टाइटल, इट्स अ क्वालिफिकेशन, इट्स अ बैज, जो कि एक जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं और खास तौर पर क्लाइंट्स के लिए एक हद तक मैटर करता है. The other day, I was speaking to a partner of an international firm, and उनसे मेरी एक बहस छिड़ गई. He was looking forward to opening an office in Islamabad. और वो कहते हैं कि जी क्लाइंट्स को इस तरीके से सिक्योर करते हैं हम लोग, क्लाइंट्स को इस तरीके से बिल करते हैं हम, क्लाइंट्स को इस तरीके से चलाते हैं हम लोगों का, ये तरीकेकार होता है, ये तरीकेकार होता है. एंड आई एक्सप्लेन टू हिम, पाकिस्तान के अंदर एंड खास तौर के ऊपर लिटिगेशन साइड के ऊपर, a lawyer is not interested in the name of the firm. A lawyer may be perhaps interested in the name of the chambers. Oh, sorry, the client. What the client is basically, essentially, and primarily interested in is the counsel's personal abilities. जिस तरह मेरी अली रज़न पार्टनर्स फर्म है, ऑफ कोर्स वी हैव बिल्ड अ रेपुटेशन. हम लोगों के पास जो इस किस्म के लॉयर्स हैं, जिस तरह के मेरे सीनियर हैं, वी हैव बिल्ड अ रेपुटेशन. बट हमारी फर्म के अंदर भी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कि आगे कहते हैं कि जी अली रज़ा साहब ये केस करेंगे. बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो आगे आके कहते हैं कि हमजा ये केस करेगा. बिकॉज उन क्लाइंट्स ने मुझे आर्ग्यू करते देखा है, या मेरे सीनियर को आर्ग्यू करते देखा है, या फॉर दैट मैटर मेरे किसी और पार्टनर को आर्ग्यू करते देखा है. वो आए हैं, वो फर्म का स्ट्रक्चर है, एक फर्म का एक अपना तरीकेकार है, वो उस तरीके से चलते हैं. बट द क्लाइंट स्पेसिफिकली आर इंटरेस्टेड इन ए पर्टिकुलर लॉयर, कि वो किस तरीके से केस को प्रेजेंट करेगा, वो किस तरीके से ड्राफ्ट करेगा, वो किस तरीके से, उसकी क्या एबिलिटी है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की, हाउ फास्ट कैन ही थिंक ऑन हिज फीट, हाउ गुड
how much of a goodwill does he have with the judges, how much the judges trust this guy who is arguing before him, so forth. So even joining a good chambers or joining a good firm or having titles or qualifications do not guarantee clientele or work, at least for litigation lawyers. This is a recognition you will have to develop and secure over years. बहुत सारे केसेस, आई वुड से 50 to 60% ऑफ केसेस जो मेरे पास आते हैं वो किस तरीके से आते हैं कि मैं कोई अदालत के अंदर कोई केस आर्ग्यू करके निकलता हूँ और पीछे से कोई साहब आके कहते हैं कि जी आप अपना नंबर दे रहे हैं, या वर्ड ऑफ माउथ, मैंने किसी एक क्लाइंट के लिए काम किया है और कोई और बंदा उस तरीके का काम कराना चाह रहा है, फॉर इंस्टेंस फैमिली का मैटर हो गया, ऑयल एंड गैस की कुछ सेक्टर्स इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं, तो वो वर्ड ऑफ माउथ और एक रेफरल के तरीके से यहाँ पे काम चलता है. लॉयर्स इन पाकिस्तान आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज देम. हम अपना अखबार के अंदर इश्तेहार नहीं दे सकते, हम अपना बोर्ड इनडायरेक्टली यहाँ पे बहुत कुछ हो जाता है, मगर हम अपने कोई पोस्टर्स नहीं छाप सकते, हम किसी तरीके से क्लाइंट्स को सोलिसिट नहीं कर सकते. At best, what we can do is if we want to secure any clients, we can send out an email or a prospectus कि भाई हम लोग इस तरह का काम करते हैं, these are our achievements. If you want would like to retain us on a panel, banks के अंदर ही खास तौर के ऊपर होता है, ministries के अंदर होता है, so forth. So that is how you enter and you start operating in this profession. The next thing is navigating. Another, I would try to explain this through a quote or a dialogue, whatever you want to term it. That is, everybody's got to plan for themselves, or you have to plan for yourself. If you do not plan for yourself, chances are you're going to fall into somebody else's plan. And guess what they might have planned for you? उर्दू की इसकी तर्जुमा कि आपको अपने प्लान बनाना है. अगर आप अपना प्लान नहीं बनाएंगे तो किसी और के प्लान में गिर जाएंगे. और सोचिए कि कोई आपके लिए क्या प्लान कर सकता है. ये चीज मुझे कुछ अरसे बाद वकालत में समझ आई थी कि आई thought there were people I was associated with, there were things that I was doing, and I trusted my group or associates and all. But हर बंदा यहाँ पे एक अपनी दौड़ में है, हर बंदा अपनी दौड़ में है. सो पहले 3-4 साल आप स्किल्स एक्वायर करें, स्किल्स को डेवलप करें, नॉलेज एक्वायर करें, नॉलेज को अपनी रिफाइन करें, और उसके बाद एक प्लान बनाएं अपने करियर का. आप अपना चेंबर बनाना चाहते हैं, आप अपनी फर्म बनाना चाहते हैं, किस तरीके के क्लाइंट्स आप चाहते हैं, आप जुडिशरी में आना चाहते हैं, आप अटॉर्नी जनरल ऑफिस में जाना चाहते हैं, एडवोकेट जनरल के ऑफिस में जाना चाहते हैं, या कोई नौकरी करना चाहते हैं. बहुत सारी यहाँ पे कंपनीज हैं जो कि लीगल काउंसिल्स रिटेन करते हैं इंटरनली. तो यू हैव टू प्लान. पहले 4-5 साल बेशक कीप योर हेड डाउन, फ्री फॉल में रहें, जस्ट बी एन एक्सप्लोरर, बट there should be a time when you sit down and you plan your career. The sooner you do it, the better. किन लोगों के साथ एसोसिएट करना है, किस किस्म का काम करना है, क्या रूटीन रखनी है. रूटीन इज द utmost important thing in this profession. Wake up early, get to court or office early, maintain a discipline, a healthy lifestyle. किस टाइम के ऊपर लंच करना है, किस टाइम के ऊपर मीटिंग सेट करनी है, किस टाइम के ऊपर यू कॉल इट अ डे. गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 1 day ऑफ. संडे वुड बी गुड. कुछ जो चेंबर्स लिटिगेशन के होते हैं वो सैटरडेज अपने आप को ऑफ देते हैं क्योंकि वो संडे को प्रिपेयर करते हैं मंडे के केसेस. तो यू हैव टू देन develop and maintain a strict routine and a healthy routine, a balanced lifestyle as well. बाकी देखिए, ये सब कुछ आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, क्या कुछ पढ़ते हैं, कितना कुछ पढ़ते हैं, और कितनी जल्दी इन चीज़ों को, इन मामलात को समझ जाते हैं.
So planning is extremely important. You need to have a 3-year plan, a 5-year plan, a 10-year plan, a 15-year plan, short-term plan, medium-term plan, long-term plan. और मेरे जो पहले उस्ताद थे, अल्लाह उनको बहुत खुश रखे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। वो कहते थे एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी ट्रू। एंड मेरे पास कुछ एसोसिएट्स आए जिनको मैंने इन चीजें कुछ सिखाई, एंड दे ऑल्सो फाउंड इट ट्रू। सो वी कैन टेस्टिफाई टू व्हाट my first mentor, my first teacher taught me, or what he said. He said 3 good years, and I'm just trying to keep this light and trying to explain you with illustrations and examples. He said 3 good years and a very good car, 5 good years and a very good bank balance, and 10 good years and a very good house. जो इन तीनों चीजों के बारे में 3 साल, 5 साल, 10 साल के बारे में कॉमन है, वो है गुड ईयर्स। So the question that I ask myself and I ask and invite you to consider is, when do the good years start? I believe personally, good years start after around 5 years, given that you've done 2 years at the lower courts and 3 years at the high courts. And by the end of those 5 years, you have joined a good chamber, you've got or joined a good firm, and you've developed a good practice, a good practice routine, a steady income, steady clientele, a financial security. और वो उन 5 साल के बाद पहले 3 साल अगर आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे तो आप बहुत अच्छी गाड़ी खरीद लेंगे। फिर 5 साल होंगे, 10 years into the profession, आपका बैंक बैलेंस बड़ा अच्छा हो जाएगा, और फिर आप 5-7 साल और लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपके पास इतना पैसा होगा कि आप घर बना सकेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप गुड ईयर्स और गुड वकालत कर रहे हैं तो दिस ऑल इज नॉट आउट ऑफ रीच, प्रोवाइडेड यू आर फोकस्ड एंड यू फोकस ऑन एक्वायरिंग स्किल्स। ये एक हुनर है। यहां से बात चल पड़ती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। आप लोगों ने भी लिंक्डइन के ऊपर और आगे पीछे और बार रूम्स के अंदर एक बड़ी बहस सुनी होगी, बड़े यंग लॉयर्स, और खास तौर पर यंग लॉयर्स के दरमियान होते हैं ये सीनियर लॉयर्स जो 5-7-10 साल गुजार चुके हो ना, वो ये बात कभी भी नहीं करते, क्योंकि वो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं। And जिस तरह मैंने कुछ कहा था कि जी प्लीज डू नॉट फाइंड दिस ऑफेंसिव, आई एम जस्ट शेयरिंग my insights or my experiences with you. Financial security. Financial security discuss करने से पहले what you guys need to understand is कि legal profession is part of services industry. This is not an industry के जहाँ पे we are dealing with goods. हम कोई चीज असेंबल नहीं कर रहे, हम कोई चीज बना नहीं रहे, हम कोई तिजारत नहीं कर रहे कि जहाँ पे कोई प्रॉफिट मार्जिन है, हम 100 रुपए की चीज जाके 110 रुपए की बेचते हैं, या नुकसान भी कर लें, 100 रुपए की चीज 80 रुपए में, 90 रुपए में बेचते हैं। दिस इज अ सर्विसेज इंडस्ट्री, एंड जिस तरीके से मैंने पहले समझाया था कि योर इनकम और योर सक्सेस is dependent entirely on your recognition and your reputation. Sir, sorry to interrupt. We're So, going to continue again in the next meeting. That will be definitely for 20 minutes. ये मीटिंग sir, क्योंकि ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, इसलिए रिक्वेस्ट थी sir, कि थैंक यू सो मच। sure. Let's recall it. Thank थैंक यू you. सर। बड़े आते हैं वो, बड़े बड़े लोग हैं वो आते हैं, वकालत करते हैं, फीस मिली नहीं मिली उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे जस्ट टू प्रैक्टिस। एंड देन देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ लॉयर्स व्हिच आई वुड लाइक कि हम लोग उनमें से हों और आप लोग भी उनमें से हों, कि सिंस इट इज अ सर्विसेज इंडस्ट्री, ट्रीट इट सीरियसली, आस्क फॉर योर फी, डोंट वर्क फॉर फ्री, डोंट एक्सटेंड अनवारंटेड फेवर्स। आप जो काम कर रहे हैं आपका हक बनता है, आप उसको चार्ज करें, खुले तरीके से चार्ज करें, धड़ल्ले से चार्ज करें, मगर कॉम्प्रोमाइज मत करें। अपने सुबह इस सोच से मत निकलें, या अपने टारगेट्स मत रखें कि जी महीने के आखिर में मुझे ये चाहिए, मुझे 6 महीने के आखिर में ये चाहिए। ऑफ कोर्स दैट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कि 6 महीने में मुझे किधर होना है, 6 साल के अंदर किधर होना है, वो सब चीजें आपको उन चीजों को प्लान करना पड़ेगा। बट
अपनी प्रैक्टिस को प्योरली मॉनेटरी गेन्स के लिए मत इस्तेमाल करें। आई गिव यू वन एग्जांपल। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं, बहुत सारी प्रोग्राम्स आते हैं, जहां पे अल्टीमेटली वो आपसे ये नहीं पूछते कि आपने कितना पैसा बनाया, क्योंकि वो आपको खुद पैसा देने के लिए तैयार है। आप एलएलएम के लिए जा रहे हैं, पीएचडी के लिए जा रहे हैं, किसी और कोर्स के लिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, वो आपसे पूछते हैं आपने किया क्या है? आपने इस कम्युनिटी के लिए क्या किया है? आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स क्या हैं? आपके अंदर नेटवर्किंग स्किल्स क्या हैं? आपकी प्रोफेशनल अकॉम्प्लिशमेंट्स क्या हैं? और जो सुबह पैसा लेने के लिए निकलते हैं, बनाने के लिए निकलते हैं, वो कभी भी कुछ नहीं लिख पाएंगे। सो एवरी नाउ एंड देन यू शुड डू समथिंग विच इज वर्थ वाइल, जो कि प्रोफेशनली कम्युनिटी के लिए आप कुछ कर रहे हैं, गवर्नेंस के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई एक नॉवल प्रोपोजिशन पे आप काम कर रहे हैं। एंड टू एक्सेल इन दिस प्रोफेशन, प्लीज 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 एसोसिएट योर सेल्फ विथ गुड लॉयर्स, learned lawyers, respectable reputable lawyers। ग्रुप बंदी, और वो ग्रुप बंदी आगे जाके बहुत सी और चीजों के अंदर आप लोगों की एक्सप्लॉइटेशन के लिए इस्तेमाल होती है। आई हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दैट, आई हैव लिव्ड थ्रू इट, आई सी इट एवरी ईयर। 3-4 महीने आते हैं, बड़ी हाइप होती है, इस्तेमाल किया जाता है यंगस्टर्स को। इन्वॉल्व हों, ऑफ कोर्स दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोफेशन, बट इन माय humble view, there is a concept called regulatory capture. Regulatory capture means that the people who are being regulated capture the regulator। ये इस तरह की बात है कि एक इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री है, और ऊपर पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी बैठा हुआ है, और जितने लाइसेंसीज हैं, आपकी जितनी टेलीकॉम कंपनीज हैं, वो उस पीटीए के बोर्ड के ऊपर जाके बैठ जाएं और अपने फैसले खुद करने लगे। या जिस तरह और आपकी पेमरा है, अब ये जितने आपके पास 70-80-100 चैनल से ज्यादा हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, वही लोग उनके बोर्ड्स के ऊपर जाके बैठने लग जाए, उन्हीं की कमेटीज के ऊपर बैठने लग जाए और कहें कि हम चलाएंगे इसको। ये वहां से एमिनेट करते हैं, नो बडी शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस, एसोसिएशंस तो समझ आती हैं, दोज आर एसोसिएशंस, बट councils are being regulators, they're victims of regulatory capture and do not fall into their traps। And I'm being blunt about it, अगर कोई सुन रहा है तो मैं माजरत चाहता हूँ, but this is the reality, और ये बच्चों को नहीं बताया जाता। You just focus on your practice and your career, and this is the only way you would excel। And I believe we've got around 10 minutes left, so if anybody wants to pose any question, I'm here। If anybody wants any clarification, most welcome। Okay, we've got a question। What is your advice for somebody who wasted first few substantial years? How can they rejoin the workforce? There is no workforce, ji. I would correct it and say कि जी, this is a profession। You just, इस प्रोफेशन के अंदर आप एक स्पीड से ज्यादा नहीं चल सकते हैं। आप कुछ थोड़ा सा एक्सेल कर सकते हैं। You just find yourself a good senior, start sitting with them or her and ask them कि जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मुझे कुछ सिखाइए, और फोकस ऑन दैट एंड आस्क हिम टू, एंड सिट डाउन विद हिम एंड प्लॉट योर 6 months or 3 months with him and take it from there। Second, Chandni Jamali, how do cultural and societal norms in Pakistan influence the approach and effectiveness of advocacy in legal and social justice context? इसके ऊपर तो जी पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे है, सोशल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं। यू हैव टू ब्रेक अवे फ्रॉम दोज एंड यू हैव टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल। The law is there, the letter of law is there, the judgments are there interpreting the law, the judgments and precedents are telling you how to go about it, and you just get yourself good cases, get secure yourself a few cases, and you just practice. Do not concern yourself
with left, right, and center and other people's opinions. And don't let anybody influence your opinions either. How to plan your internships in your LLB. देखिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर एलएलबी करने का कोई मकसद नहीं है. आई डोंट नो पाकिस्तान के अंदर वो 5 साल वाला चल रहा है, बट द लास्ट ईयर, द लास्ट 2 इयर्स, अगर 3 साल वाला एलएलबी जिस तरीके से पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में बकाया एक्सटर्नल प्रोग्राम्स कराते हैं, लास्ट ईयर इज गुड. उसके बाद जिस टाइम पे व्हेन यू आर वेटिंग योर एग्जाम्स, दैट इज द टाइम टू डू योर इंटर्नशिप. पहले जो साल होते हैं, जस्ट स्पेंड दैट टाइम रीडिंग थिंग्स. एक चीज मैं बिल्कुल भूल गया, मैं सॉरी सॉरी, और ये जो बात है, whenever you get the time or the chance, please watch as many movies, English movies as you can, and watch and read as many novels, English material as you can. You need to read at least one book a month, at least one book a month. ये इतना heavily English जबान से इन्फ्लुएंस्ड प्रोफेशन है. यू नीड टू बी वेरी गुड एट इंग्लिश. आप नहीं भी होंगे तो तब भी चलेगा, बट प्लीज you need to be able to articulate your stuff, whatever you're saying. And court room के अंदर half of it is drama, half of it is how you're performing, your body language, your phrasing, so forth. So please watch as many English movies as you can, use subtitles to learn English, read as many books as you can, instead of wasting time in internships and just going around, and just don't waste your time. अच्छा जी, चांदनी का अगिल से सवाल. एंड ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी सीनियर्स फाइंड टू टेक स्टूडेंट अंडर देयर सुपरविजन. Somebody who has spent 15-20 years in the profession knows he will be able to identify the spark in you. You need to show that. You need to be curious, extremely curious. You need to question everything. Acha ji, Kainat Gol, what is your advice for those students who just enter LLB degree and they join court or assist a senior? No point, ji. This is your time to enjoy your university life and your youth. Just आप अपनी जो आपकी नॉलेज बेस इंफॉर्मेशन है, रीड बुक्स, रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, सोशलाइज विद पीपल, मेक कॉन्टैक्ट्स. क्योंकि जिस टाइम के ऊपर आप प्रोफेशन के अंदर आएंगे, यही कॉन्टैक्ट्स, यही सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंसेस और यही चीजें आपको हेल्प करेंगी अपनी प्रैक्टिस डेवलप करने के लिए. Farwa Saber, if someone is going to settle abroad, what should they do which will help them with their career abroad? जी, हर jurisdictions के अपने licensing requirements और criterias हैं. You would need to refer to their relevant regulators' requirements. Muhammad Rafaqat, how can we achieve financial security in the early stages of journey? Aha, this is $1 million question. Unfortunately, nobody pays $1 million here. So you should ask your senior to at least pay your stipend. And don't equate yourself with laborers. कि जी laborers की 35,000 रुपए, 36,000 रुपए, 37,000 रुपए. Don't even use the word. That is for labor, manual labor. You are educated people. You are practicing in a very prestigious profession. Do not equate yourself with laborers. Do not draw any analogies therefrom. And just ask your senior कि जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास काम कर रहा हूँ. Please do it. Raise this voice, ask them for money, and ask them for some sort of compensation, stipend. It's your right to ask. What else? I hope I've answered all the questions, Ji. Yes, sir, you have answered. Thank you so much for your time. And Pleasure. we are really humbled that you have joined us and shared your insights. So, suggest some books, just not romance or drama or emotion, just books. पढ़िए, हिस्ट्री के बारे में पढ़िए, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़िए, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़िए. पीटर फ्रैंकोपैन की बुक्स हैं, सिल्क रूट है, रिवेंज ऑफ जियोग्राफी, सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो ड्यूस, लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी फ्रॉम युval नोआ हरारी. बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड human nature. This law is part of humanities. Hamad, do we have a minute? I want to explain one more thing to everybody, the attendees. Yes, please, sir. Yes, please. Achha, there is one example I give to all my associates, and guys need to understand it. What is law? जो मैंने बुक्स की बात से बात आगे चल पड़ी. What is law? The
easiest definition or explanation of law is it is nothing. Law is nothing more than refined wisdom of centuries. आप लोग अपनी लाइब्रेरीज के अंदर जाते हैं, आप अपने चेंबर्स फर्म्स के अंदर बैठते हैं, यू आर सराउंडेड बाय बुक्स. डू यू बिलीव दैट इज लॉ? You can classify it as positive law or statutory laws, rules and regulation and precedents, but that is not law per se. अगर किसी ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का कोर्स पढ़ा है और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ा है, या बाकी में भी जो स्टूडेंट्स के अंदर एक थ्योरी आती है HLA हार्ट की, रूल ऑफ रिकग्निशन, उसके अंदर वो कहते हैं कि what is law? Law or a rule is something which is recognized by the people as binding on them. So I'll just give you one example. Imagine for a moment कि जी एक बड़ा apocalyptic किस्म का कोई इवेंट हो जाए तो दुनिया के अंदर सारी किताबें, लाइब्रेरीज, कागज सब कुछ जल के सब कुछ तबाह हो जाता है, बहुत सारी इंसानों को भी इफेक्ट होता है. देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ लेट अस से 1000 पीपल हु सर्वाइव दिस apocalyptic इवेंट. अब वो 1000 लोग हैं और उनके पास ना कागज है, ना पेन है, ना किताब है, और उनके अंदर से एक शख्स दूसरे शख्स को मर्डर कर देता है. अब वो जो बकाया 998 बैठे हुए हैं, उन्होंने फैसला करना है उन दोनों के दरमियान. एक तो मर गया जो जिसने कत्ल का इल्जाम जिसके ऊपर है, कि इसको सजा क्या देनी है. उस जो 999 का पूल जो होगा उसके अंदर से ऑफ कोर्स कोई कारपेंटर होगा, कोई वेल्डर होगा, कोई वकील होगा, कोई जज भी रह चुका होगा, कोई मेडिसिन के प्रोफेशन में से होगा, कोई आर्किटेक्ट होगा. सो देयर वुड बी, इस पूल के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोफेशंस में से होंगे. Does any one of you for a moment think that those 999 people will not be able to reach a decision as to how to treat the person accused of murdering the 1000th member of that group that survived? Of course there would be. उनके दरमियान डिबेट्स बड़े इंटरेस्टिंग होंगी. क्यों मारा, किस तरीके से मारा, डॉक्टर कहेगा इसकी मौत इस तरीके से हुई, आर्किटेक्ट उसको किसी और तरीके से परसीव करेगा उस मैटर को. बट फैक्ट ऑफ द मैटर, एट द एंड ऑफ दैट मजलिस, जो जितने दिन भी वो चलता है, ट्रायल और डेलिब्रेशंस, दे विल बी एबल टू रीच a verdict, a sentence, how to deal with that 999th person who was accused. And to reach that verdict or sentence, they did not need any books. All they did was they utilized and employed and deployed their wisdom to the problem. I hope you guys understand this. ये जितनी किताबें, जितने स्टैट्यूट्स हम देखते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बैठ के डिबेट होती है, कानून होना क्या चाहिए, जजेस भी बैठ के रीजनिंग कर रहे होते हैं और इंटरप्रेट कर रहे होते हैं. सो डू नॉट फॉर अ सेकेंड बी, मतलब कि परेशान हो जाओ कि ये कानून है क्या, ये होता क्या है, कैसे होता है. इट इज नथिंग. इट्स जस्ट 6000 साल से एरिस्टोटल, प्लाटो के टाइम आप निकाल लो, आप पुराने वक्तों को निकाल लो. सबसे पहले जो लॉ लिखा गया था, that was in Mesopotamia by a king named Nebuchadnezzar. उसने एक प्लेट्स के ऊपर उसके कवानीन आज भी मिलते हैं, आप गूगल के ऊपर चले जाएं. वो उस टाइम से देखो लॉ रिफाइन होता आया. कभी वो जबानी सूरत में था, कभी वो ट्रेडिशन की सूरत में था, फिर किसी टाइम के ऊपर वो जजमेंट्स, प्रेसिडेंट्स की सूरत में आ गया. आप देखिए यूके के अंदर कोडिफाइड लॉ नहीं था, अब कोडिफाइड लॉ बनना शुरू हो गया, और हमारी जुरिस्डिक्शंस के अंदर अब हर चीज ही कोडिफाइड होगी. और यहाँ तक पाकिस्तान के अंदर प्रोविजन एग्जिस्ट करती हैं कि हाईवे के ऊपर एक वक्त में कितनी लाइफ स्टॉक जो है वो क्रॉस कर सकता है हाईवे को. सो इनिशियली इट वाज ऑल जस्ट सिंपल विजडम, कलेक्टिव agreement of the people of the society. Now it is just letter of law and it is becoming positive law. So try to understand, ये कोई इतनी कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं होती लॉ. इससे परेशान मत हो जाया करें. एक प्रोविजन को पढ़ के उसके पीछे उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें, उसकी जूरिस्प्रूडेंस समझने की कोशिश करें. एंड दिस वुड बी माय लास्ट रिक्वेस्ट एंड एडवाइस टू ऑल ऑफ यू. फोकस ऑन जूरिस्प्रूडेंस, not specific particular wordings of laws. And what is jurisprudence? I would refer you back. That should be your research from today. कि jurisprudence होती क्या है. हमाद, जी जी सर. I think I said enough. अगर थैंक यू अभी सो भी मच. किसी की, जी. जी,
सर लास्ट क्वेश्चन है, इफ यू कैन कंसिडर माई सेल्फ लाइक, मैंने एक क्वेश्चन की है, जी जी। इफ यू कैन कंसिडर इट प्लीज. Last question, please. If we have the opportunity to go for masters and go abroad shortly after the graduation, like 1 year, should we pursue it as better opportunity or later consider it to settle in the field of law abroad? देखिए मैंने आपको बोला था, as soon as you figured out your niche, as soon as you figured out कि भाई मैंने करना क्या है, what interests me, मैं पाकिस्तान आके किन अपॉर्चुनिटीज को, इन चीजों को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकूंगा, इस नॉलेज को, इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन को, go for your masters. एंड एक और चीज, if Hamad you are considering a masters, take a word of advice. Masters academic तो एक qualification है, but when you're going for masters, choose the best university possible, because at the end, after you've done your masters, it all comes down to your alumni and your network. आप वहां पे जिस टाइम के ऊपर मास्टर्स करने जा रहे हैं, यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, एंड जिस टाइम के ऊपर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल विच आर नॉट फ्रॉम योर फैकल्टी. फॉर इंस्टेंस लॉ की जगह यू विल बी मीट पीपल हु आर फ्रॉम म्यूजिक, हु आर फ्रॉम आर्किटेक्चर, हु आर डूइंग मेडिसिन और इंजीनियरिंग, सो forth. You have to do a lot of networking over there, and when you come back to Pakistan, you need to maintain and remain connected with those people. So masters का एक aspect तो आपकी academic qualification or accomplishment है, and the second is to connect with the international community. उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी चूज कीजिए. जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम. जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज. थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज.